नमामि रामं रघुवंशनाथं त्याजं दोषवादित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमीति चापरे. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. A very good question arises here about animal killing. कि पशु की हत्या की जाए कि न की जाए. वेदों में वर्णित है, माँ काली को भी बलि होती है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो बलि पहले होती थी वो उसके जनरेशन को सुधारने के लिए होती थी. घोड़े की बलि होती थी, गाय की बलि होती थी. लेकिन कैसे होती थी? गाय को बलि देने के बाद, हवन कुंड में देने के बाद, उसी गाय को पुनः अग्निदेव प्रकट करते थे और वो गाय मृत्यु से पुनः जिंदगी को प्राप्त कर लेती थी. देन वी शुड नो, ये सेक्रीफाइस नहीं था कि काटा काट करके खा गया. हालांकि विद्वान जन किसी भी प्रकार के सेक्रीफाइस को बुरा मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो सेक्रीफाइस था, दैट वाज नॉट किलिंग, दैट वाज किलिंग लाइक ए डॉक्टर. एक डॉक्टर किसी को बेहोश कर देता है, एक डॉक्टर किसी का पेट फाड़ देता है, तो उसको पुनः स्टिच करके वो जिंदा कर देता है. लाइक दैट हमारे यहाँ भी था. पशुओं की हत्या तो की जाती थी, लेकिन उसको जिंदा भी कर दिया जाता था. There are many activities in Vedic literature which are subject of contention. For instance, it is said that an animal can be killed in a sacrifice, yet some maintain that animal killing is completely abominable. Although animal killing in a sacrifice is recommended in the Vedic literature, the animal is not considered to be killed. The sacrifice is to give a new life to the animal. Sometimes the animal is given a new animal life after being killed in the sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the human form of life. Do you understand? That means by some reason that very animal is not animal but was a human being, and he was converted into animal. After sacrifice, he becomes man, he becomes Devta. Lord Ganesha, the head of an elephant is cut down, and that very head is planted on the body of Lord Ganesha. But the elephant which was cut down become Gandharva at the same time. That means the killing of an animal was not a real killing, but was giving a new life of the society, of that very person, of that very animal. Animal is converted to Gandharva. That very elephant, वो जिस हाथी का मुड़ी काट करके गणेश जी में चढ़ाया गया, गणेश जी को लगाया गया, वो हाथी गंधर्व बन गया. कहीं पर हमारे शास्त्रों में ये विधान नहीं आता है कि हम उन पशुओं को मार करके खाते थे. नहीं, उन पशुओं को मार करके हवन कर देते थे और उनसे
उनसे ब्रिलियंट नेक्स्ट जनरेशन का एनिमल पैदा होता था, वहाँ से नई जिंदगी शुरू होती थी, नया जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता था. That was the meaning of sacrifice. Sometimes the animal is given a new animal life after being killed in the sacrifice, and sometimes the animal is promoted immediately to the human form of life. But there are different opinions about the sages. Some said that the animal killing should always be avoided, and others said that for a sacrifice, a specific sacrifice, it is good. All these different opinions on sacrificial activities are now being clarified by the Lord Himself. Okay? Thank you.